Good morning, dear students. I am Bharti Kathuria Saigal from the SD Vidya School. Today we are going to discuss about the topic blood pressure and the related terms. Now, first of all, let's discuss what is pulse. You must have seen doctors keeping a hand on your wrist and checking the sounds or checking the pulse. Now, pulse is not same as heartbeat. Heartbeat is caused because of the opening and closing of the valves present in the heart or in the associated blood vessels. But pulse is the pressure wave that travels through the arteries. So when the heart contracts, the blood flows with the pressure in the artery, which creates a pressure wave which is felt as a jerk in the artery, and this is what we call as pulse. So pulse is the result of the contraction and relaxation of artery. Pulse rate should be equal to heart rate. So when you see doctors checking your heartbeat together with your hand on the pulse, they are actually trying to coordinate that whether both are same or no. They could vary if the blood vessels filled with fatty deposits or damaged interior walls. So in this way, the doctors can conclude if you have any kind of disorder in the walls or in the blood vessels. Now let's discuss about the blood pressure. Now blood pressure is the pressure which is exerted by the blood against the walls of the blood vessels, that is arteries and veins. Now blood keeps circulating. At the time of the contraction of ventricles, the blood is forced into the arteries. The arteries expand as the blood travels through. Blood moves high. As the blood moves high, the pressure should be low. Blood continues to move into the areas without blood and eventually moves back to the heart when the heart is emptying. So blood pressure is expressed in two measures, the systolic and the diastolic blood pressure. Systolic is the pressure at the time of systole, which is the contraction of the heart, while diastolic pressure is the pressure at the time of the relaxation of the heart. So diastolic pressure refers to the pressure at the time of relaxation. So it is lower as compared to systolic, which is at the time of contraction and is higher. It is usually measured by an instrument which is called sphygmomanometer. In most of the adults, the normal blood pressure at rest is about 100 to 130 millimeters mercury, that is mmHg systolic, and 60 to 80 mmHg diastolic. For most of the adults, the high blood pressure is present if the resting blood pressure is persistently at or above 130/80 or 140/90 mmHg. So these are the normal ranges. If it is above, it is called high blood pressure or hypertension. If it is below, it is called hypotension. Now measuring blood pressure. As we discussed, systolic blood pressure is at the time of the contraction of the heart. So it creates the pressure in arteries and there is a peak in the ventricular contraction. While in the diastolic pressure, there is a pressure in the ventricles and then there is relaxation of the ventricles. The blood pressure is measured, as I told you, when the cuff is inflated or tightened until the cuff pressure is greater than the systolic pressure. Blood flow in the arm ceases and there is no pulse which can be heard or felt. Pressure in the cuff is reduced so that we can listen to the pulse sounds. The systolic blood pressure comes at the first tapping sound. So sphygmomanometer में जो first जहां पर जाकर stop करता है blood pressure, जो जहां पर आप जब उसे pump करेंगे तो जहां पर पहला जाकर सबसे पहले वो stop करेगा और move करेगा mercury का level, that will be your systolic blood pressure. और no more tapping sound जब आना बंद हो जाएंगे, constantly flow करेगा, then it will be called as the diastolic blood pressure. So this is the sphygmomanometer that we were talking about. So cuff, यहाँ पर cuff को tightly यहाँ पर इस तरह से किया जाता है कि जो आपको पल्स है वो सुनाई देना बंद हो जाए और आपको हार्ट का किस तरह से उसके अंदर से फ्लो कर रहा है ब्लड वो क्लियरली यहाँ पर सुनाई दे.
So that is the blood pressure which can be heard through this sphygmomanometer with the help of a stethoscope. Next, we were talking about hypotension. Now, what is hypotension? As I told you, if there is a blood pressure which is lower than the normal blood pressure, it is called as hypotension. So, the systolic blood pressure, if it is 100 or less than 100, then it is a hypotension condition. The causes of hypotension may be increase in the fitness because of it, or there can be change in the body position and circulation of blood pressure, or because of sitting and standing, or there can be poor nutrition or blood loss. Now, hypertension, which is called the low blood pressure, it occurs especially in the arteries of the systemic circulation. A systolic blood pressure of less than 90 millimeter of the mercury or a diastolic less than 60 mmHg is generally considered to be hypotension. It is the opposite of the hypertension, which is the high blood pressure. Low blood pressure can deprive the brain, that's very important, deprive the brain and other vital organs of oxygen and nutrition. तो जो organs तक blood जा रहा है, तो अगर वो blood pressure कम होगा, that means blood supply वहां पर कहीं ना कहीं hindrance आ रहा है, तो that can lead to a life threatening condition called shock. ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन इंट्रावेनस फ्लूइड्स या वेसोप्रेसर्स दिए जाते हैं. वेसोप्रेसर का मतलब है जिसमें कि जो ब्लड वेसल्स है उनको यहाँ पर कंप्रेस किया जाता है ताकि ब्लड की सप्लाई को बढ़ाया जा सके, या फिर इंट्रावेनस फ्लूइड्स दिए जाते हैं ताकि ब्लड प्रेशर को बढ़ाया जा सके. नेक्स्ट इज हाइपरटेंशन, जिसे हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं जनरल लैंग्वेज में. इन दिस द ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज 140 or more than 140. It can be caused because of the damaged arterial walls or fatty deposits in the arterial walls, or there can be increased viscosity, thickness बढ़ गई है अगर blood की, और because of the increased stress, stress level बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से भी it can lead to hypertension. So आपकी जो टेक्स्ट बुक है वो कहती है कि नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है हमारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो लेते हैं 120/80, जिसमें 120 है आपका सिस्टोलिक प्रेशर और 80 है डायस्टोलिक प्रेशर. तो उससे अगर ज्यादा हो रहा है, 140/90 कहते हैं यूजुअली हम, कि 140/90 से अगर ज्यादा हो रहा है देन इट इज कॉल्ड एज द हाइपरटेंशन. तो हाइपरटेंशन की वजह से ब्रेन, किडनी और आपकी वाइटल ऑर्गन्स जो है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जो है बॉडी के, वो भी अफेक्ट हो सकते हैं. सो it is a long-term medical condition in which the blood pressure in the arteries is persistently elevated. It may be primary high blood pressure or secondary high blood pressure. 90 to 95% of the cases में कोई नॉन स्पेसिफिक लाइफस्टाइल है या जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से ये कॉज हो सकता है, और कुछ केसेस में 5 to 10% केसेस के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे क्रॉनिक किडनी डिजीज है, या किडनी को जो आर्टरीज आ रही हैं वो नैरो हो गई हैं, या एंडोक्रीन जो सिस्टम है उसमें कोई डिसऑर्डर है, या बर्थ कंट्रोल पिल्स की वजह से भी द हाइपरटेंशन कैन बी कॉज्ड. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट थ्रोम्बस एंड एम्बोलिस. थ्रोम्बस क्या होता है? थ्रोम्बस क्लॉट बन जाता है ब्लड वेसल की वॉल के अंदर, तो हम उसे थ्रोम्बस कहते हैं. लेकिन अगर वो मूव करना स्टार्ट कर दे देन इट विल बी कॉल्ड एज एम्बोलिस. इसके कॉजेस क्या होते हैं कि ब्लड वेसल जो है रफ है, तो उसकी वजह से किसी बर्न या रप्चर या फैट की वजह से रफ हो चुका है उसका सरफेस, तो वहां पर क्लॉट्स बन सकते हैं. और स्लो ब्लड फ्लो कर रहा है, लो लेवल ऑफ एक्टिविटी है, तो उसकी वजह से भी क्लॉटिंग हो सकती है. जनरली इस केसेस के अंदर एस्पिरिन दिया जाता है, विच इज बहुत कॉमन, एक एंटीकोएगुलेंट की तरह काम करता है, जिसमें कि जो थ्रोम्बस है, यहाँ पर जो क्लॉट बन रहा है उसको डिसॉल्व करने का काम करता है एस्पिरिन. तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर. सो दिस हियर देयर इज अ ब्लॉकेज, यहाँ पर एक क्लॉट बन गया है यहाँ पर, जिसकी वजह से जो यहाँ ब्लड का फ्लो हो रहा था दैट विल बी स्टॉप्ड. That's all for this topic. God bless you all. Thank you. There are few facts which I have given here. Just read them carefully. So heart beats about 70 times per minute. Laughter makes the heart healthy. There's about 10,000 liters of blood is pumped by the heart per day. The heart beats after about 4 weeks of the fetal development. Women's heart beats faster than the men. The majority of heart attacks in the European countries have been reported on Christmas and New Year. The blood brings 75 trillion cells. Heart, in the case of
male and female. In the case of male, it weighs about 330 gram, while in the case of female, it weighs about 250 gram. So ये जो मुट्ठी रिस्ट के बराबर का आपकी आपके फिस्ट के बराबर का जो आपका एक साइज है हाथ का, तो ये कितना काम कर रहा है आपके लिए. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक गुड केयर ऑफ योर हार्ट. सो कोलेस्ट्रॉल की डाइट, हाई शुगर डाइट और इसी तरह से एक्सरसाइज जरूर करनी है, तो योगा सेशन जरूर अटेंड करिए एंड मेक योर हार्ट हेल्दियर and live life better and stronger. God bless you all.